which one of the following term describes not only the physical space occupied by the organism but also its functional role in the community of organism? UPSC 2013, this is OPSC 2023 actually, जोटा कि 2024 एग्जाम हेतला. ट्रू गोटे हैबिटेट रे जतले गोटे स्पीसीज रहूची से हैबिटेट रे थिला बेले एनवायरनमेंट सहित जो इंटरैक्ट करूची सेतले से करूची कोन ना जो फंक्शन ओडा से करूची मु खाउची मु पिउची मु रहूची मु आई विल गो फॉर रिप्रोडक्शन आल्सो. करेक्ट नो? तो ए जो काम गोडा, यस ए जो काम गोडा, this is what we call niche or the occupation of a species in its habitat. Ecology and ecosystem. Ecology and ecosystem. So whenever we say ecology, correct? No, till now in geography, what we studied? We studied that there is a lithosphere, there is atmosphere, and there is hydrosphere. Correct? No, होंगे नहीं? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere. तो ये जो मझी पोर्शन ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बायोस्फीयर, जो थी जीव बंची परिबो ना. जीव खाली लिथोस्फीयर रे बंचिबो विदाउट एटमॉस्फेयर, ना खाली जीव एटमॉस्फेयर रे बंची परिबो विदाउट लिथोस्फीयर, ना ताकू पानी दरकार नहीं. तो पानी पवन माटी ए तीनटा को जिंस जतले मिसिबो सेठी जो कॉन्फ्लुएंस टा बनिबो सेटा को हमें कोन कहउचे ना बायोस्फीयर. इज दैट क्लियर? यस. नाउ बेसिकली व्हाट वी हैव अ प्राइमरी एलिमेंट. जदि तमे देखिबो गोटे मनीष जीवन रे मनीषर इनिशियली कोट से एटम्स वगैरह थाले. करेक्ट नो? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्राइमरी एलिमेंट रू आमे धीरे धीरे आगु जदि बढ़िबा देन हमकु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तापर एटम रू मॉलिक्यूल रू कंपाउंड रू प्रोटीन डीएनए रू सेल बनुची, सेल रू टिश्यू बनुची, टिश्यू रू ऑर्गन बनुची, and organ रू organ system. Then we are going to become individual and individual become species. बुझियो ना नहीं? This is the evolution chain. Yes, this is evolution chain. Primary element, electron proton, atom, molecule, compound, protein ru DNA ru cell ru tissue ru organ. Similarly, even in ecology we are having this kind of system. कौन ना? there are group of individual केमती आसिला तमे देखिलो कि atom अछंती, then electron proton वगैरह concept ता भीतर अछि, then atom ru molecule ru compound ru cell बनुची, डीएनए वाला प्रोटीन डीएनए जदि तमे बायोटेक्नोलॉजी पढितो सेतिर पढिबो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल. नाउ जदि मु कहबी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ए जदि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को नेबी कैन आई से दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन. यस. सो पॉपुलेशन आर नथिंग बट दे आर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. yes populations are nothing but they are called to be group of individuals. Yes. Now when group of individuals are coming together, they are called population. Now what are these kind of individuals? Because individuals are also going to become species, different individuals. For example, human species. So human species, under one species there are many number of individuals. Am I right? Under one species there are many number of individuals. Human species, many number of individuals. Everyone will be differ from character, behavior, personality. Correct? No? Yes. But there is one unique characteristic that is coming under like, okay, these are species, they behave like this. Tankar dita hodo, dita hato, dita akhi, gote nako. Correct? No? Yes. Lanjo nahi na human species lanjo dekhucho tame nahi na. Yes. So population tame बुझिबाला कि population ए जो word ना, ए word आसी individual रो नै कि population. Now a population को मो segregate करि परबी जदि multiple populations आसिले गोटे जगह रे, that is what we call community. Correct? No? तमे भाबो आम गार community सेतिरे population अछंती, true, human being अछंती, कुकुर बिलेई भी अछंती, होंगे नै, गछ लता भी अछंती. तो कह this is a community, होंगे नै. So देखो, this is one species having population 2, this is another species having population 3, this is one species having population 1, this is one species having population 4. So group of populations are called to be, or combining all population is nothing but community. Carrot out of the community, what is community, what is population, what is individual. Is that clear? Yes. So community, when they will interact with environment, this is a community, but environment, when they will interact with the environment, the community when interact with the environment means ये जो पक्षी को निश्वास प्रश्वास पाई वायु दरकार, air दरकार. Yes. And air will be present in the environment. Yes.
पानी पीवा को दरकार से पानीटा भी एनवायरमेंट यस सो द कम्युनिटी से माने गोटे पॉपुलेशन आ गोटे पॉपुलेशन सहित कनेक्ट होउची तांको भीतर इंटरेक्शन बायोटिक हे पारे एबायोटिक हे पारे हमें देईटा को देखिबा सो जेतले गोटे कम्युनिटी इंटरेक्ट होती नॉट इंडिविजुअल व्हेन ए कम्युनिटी इंटरेक्ट विथ एनवायरमेंट yes it can be considered to be ecosystem when there that means inside the ecosystem there are community and there is environment when the community is connecting to the environment they are trying to understand environment they are doing interaction with the environment we call it as ecosystem चाहे बर्तन तब ताले जेतले म कहबे कि टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम मैराइन इकोसिस्टम तमने मैराइन इकोसिस्टम रे भी मैराइन कम्युनिटी अछि ट्रू हंगे नहीं डिफरेंट स्पेसीज अछन मैराइन रे डिफरेंट स्पेसीज रो पॉपुलेशन अछन हंगे नहीं सेतरे गछ थिबे कोरल रीफ्स थिबे फिश रो डिफरेंट स्पेसीज थिबे अलग अलग जाति रो प्राणी भी थिबे हंगे नहीं एंड तांको तांको भीतर जेतले इंटरेक्शन हबो with the environment that is what we call ecosystem then what is environment sum total of living non-living components and the events okay sum total of living and non-living components which are influences and the events surrounding an organism गोटे organism रो चारि पटे जो इवेंट गोडा होची चाहे से लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग कंपाउंड हो आउ जदी ऑर्गेनिज्म चारि पटे होची एगुडा ताकू ही हमें कहूजे कोन एनवायरनमेंट इज दैट क्लियर द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपाउंड्स दैट इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म एठी अछि ए ऑर्गेनिज्म चारि पटे चाहे से लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट हो जदी ये आर बिहेवियर को चेंज करूची यार इन्फ्लुएंस को चेंज करूची या सहित ता सहित कांटेक्ट रे अछंदी या फिर से तार इंटरैक्ट करूचंदी ताले दिस एवरीथिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट is that clear yes now what is the ecology now study of the interactions of how the living organism and their abiotic and biotic environments कि गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म अछि सी बर्तमान जेमिति इंटरैक्ट करूची का सहित ना बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट सहित inside this environment that is what we call ecology then ecosystem मु तमु कहली सिंपल कांसेप्ट बर्तन तमे ठीक पळे आसो मु तमु कोन कहली सिंपल जिंस दीटा कि भाई आमे इनिशियली इंडिविजुअल थिलु इंडिविजुअल रो आमे पॉपुलेशन हलु मल्टीपल पॉपुलेशन इज नथिंग बट कम्युनिटी एंड ए कम्युनिटी जदी इंटरैक्ट कला का सहित एनवायरनमेंट सहित दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम ट्रू कम्युनिटी जदी इंटरैक्ट कला एनवायरनमेंट सहित this is called ecosystem what is environment na environment hoji nothing but gote jodi individual achi e individual सहित से कुछ living component हो या फिर non living component हो जदी तांको भितरे किछि डील हैला and एमाने आकु इन्फ्लुएंस कले या फिर कोनोसी इवेंट क्रिएट हैला that is what we call environment yes so environment is a bigger picture that's it so environment भितरे कोन कंपोनेंट अछि ना बायोटिक अछि एबायोटिक अछि what is biotic for example गोटे लायन अछि सिंहटे सिंह गोटे डियर सहित जो इंटरेक्शन ताकू दौड़ी दौड़ी खाइबो ना हां कि नहीं yes that will be biotic सिंह निश्वास प्रश्वास न पाए ताकू एयर दरकार that will be abiotic so सिंह रो कोनोसी इंडिविजुअल या फिर कोनोसी कम्युनिटी नाउ दिस इज इंडिविजुअल will interact with either living community or non living community this is my environment and this is a single individual when the group of a community or community interact with environment बुझी होजी ना नहीं when the community interact with environment that is what we call ecosystem is a bigger picture yes कहार डाउट अछि इथरे fine okay now if you see what is the abiotic component तमर एयर नहीं जाओ वाटर नहीं जाओ सनलाइट नहीं जाओ सॉइल नहीं जाओ ह्यूमिडिटी नहीं जाओ ये सब होची तमर कोन एबायोटिक नॉन लिविंग वाला कांसेप्ट so when a community interact with abiotic so community is biotic right living being community biotic na living being when the community interact with abiotic ecosystem abiotic that is what we call ecosystem when the biotic interact with abiotic or biotic interact with biotic also that is also ecosystem okay so देखो ecosystem रे मु कोन लिखिली can I write when the community which is biotic interact with biotic or abiotic which is the environment and this is what we call ecosystem and to study this we call it as ecology बर्तन मते को मु जदी कहबी there is something called individual
there is something called species, community, environment, ecosystem, ecology. एतिकी वर्ड रो कहार इशू अछि एतिकी वर्ड individual is clear. Yes, number of group of individual they are further classified as species. Human species भितर group of individual थिबे जहार behavior and characteristics टिके चेंज थिबो, not major change. Yes, then what is community? Na group of individuals, correct? Group of individuals सेमान को नेके आछन एथिर गोटे वर्ड मु छाडी देछि population. Population the group of individuals सेमाने जाउछन population, group of population या फिर group of species, correct? Group of species, human species, ant species, animal species, tree species, ये सब species को मिसी गले community. And when this community, can I say this is biotic mostly? Biotic means living organisms. So when this community interact with environment, it will become ecosystem. When the community interact with environment, what is environment? It has both biotic as well as abiotic. Yes. When the community interact with environment, it is nothing but ecosystem. And to study this interaction, we call it as ecology. We call it as ecology. Any doubt? Yes. Car doubt ଅଛି? Okay. Now, one must have to be biotic for interaction. Interaction ପାଇଁ गोटा को निहाती biotic हवा पड़िबो नले abiotic हेले interaction केमति हो भाई feeling ही नथिबो. True. Next, with change in latitude individual character also changes. Latitude जदि change हला बर्तन भाबिनो this is 0 degree, this is 30 degree, this is 60 degree. Latitude जदि change हला individual characteristics रे भी change आसीबो. In some latitude, due to different environmental condition, the climatic behavior, there will be different ecosystem. See, what is ecosystem? Ecosystem is nothing but when the community interacts with the environment. So the community can interact with the ecosystem environment in a different way in different latitude. 0 degree रे एते तापमात्रा रे थिबो गोटे लोको environment सहित जेमिति बंचुथुवो हंगी नै 60 डिग्री सेमिति बंचु नथिवो. ट्रू. Yes. 0 डिग्री भाई साप असुप बहुत थिबे. Amazon forest रो गोटे लोकर बिहेवियर जहा थिबो तमको लागुची इंडिया रो से लोकर बिहेवियर सेमिति थिबो गोटे लोकर बिहेवियर सेमिति थिबो दिटा भीतर फरक आसीबो. That means because of the latitude, the ecosystem differs in their characteristics. Is that correct? Because of the latitude जदि मु चेंज कली ताहाले जो इकोसिस्टम जोटा कि एनवायरनमेंट सहित कंसीडर करा जाय, करेक्ट नो? तर तार बिहेवियर चेंज हो. ट्रू. That means we will get different ecosystem in different zone. 0 degree latitude ecosystem will be differ than the 30 degree ecosystem. It will be also differ than the polar wala ecosystem. होंगे नहीं. Tropical ecosystem will different than the polar ecosystem or subtropical ecosystem or temperate ecosystem. Am I right? Then what is this biome then? The all total sum of ecosystem सबु तक ecosystem को जदि नेजबी, that is what we call biome. Okay. Now तो तमे बर्तन मते को in whole we can call it as biosphere. तो different biome को जदि मु ऐड कली ताले biome रो हिजबो biosphere. तो सिंपल जिंस इंडिविजुअल रसला पॉपुलेशन रसला कम्युनिटी इंटरैक्ट वाला एनवायरनमेंट सेटा हे वाला इकोसिस्टम. सम टोटल ऑफ इकोसिस्टम विल रिलेटेड टू बायोम, सम टोटल ऑफ बायोम विल रिलेटेड टू बायोस्फीयर. इज दैट क्लियर? कार डाउट अछि थे तो कोन कहली मु गोटे फर्स्ट आमे कहले इंडिविजुअल. जे जेपन ए कांसेप्ट क्लियर होना से टफ लागियो. इंडिविजुअल जदि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मु कहली दैट इज नथिंग बट माय पॉपुलेशन. Yes, and a population जदि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हैला दैट इज माय कम्युनिटी. Yes, जदि कम्युनिटी इंटरैक्ट कला एनवायरनमेंट सहित दैट इज माय इकोसिस्टम. तो कम्युनिटी तम गां कम्युनिटी दैट इज वन एरिया. 20 किलोमीटर आगु पळेले फॉर एग्जांपल कटक भाबिनो कटक डिस्ट्रिक्ट ता होची गोटे कम्युनिटी, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट सी गोटे कम्युनिटी, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट सी गोटे कम्युनिटी. ए मानर सब कथावार्ता अलग, करेक्ट नो? होंगे नहीं. That means different community जोठी अछंती एठी तो मु आज ए ग्लोबल लेवल रे आज ए होल देखुची
तो मु कहूची कि तांकर क्लाइमेटिक कंडीशन लागी से माने इंटरेक्शन एनवायरनमेंट सहित जेमिति करछनी दैट विल मेक चेंज देयर बिहेवियर आल्सो करेक्ट नो दैट्स व्हाई दिस इकोसिस्टम इज डिफरेंट this ecosystem is different this ecosystem is different even in the same latitude ecosystem will different because मन पका भाई क्लाइमेट चेंज करेक्ट कोपेन्स क्लासिफिकेशन ईस्टर्न मार्जिन वेस्टर्न मार्जिन सेंट्रल मार्जिन तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम मिलिबन नहीं गोटे पटे सफिशिएंट अमाउंट रो वर्षा गोटे पटे वर्षा ही नहीं गोटे पटे समर ड्राई सॉरी विंटर ड्राई ट्रू आंगे नहीं तो जो जगह सफिशिएंट अमाउंट रो वर्षा सेठी बहुत भलो भलो गछलता बनिबो आ गछलता इज व्हाट एनवायरनमेंट होंगे नहीं तो गोटे गछलता थ्रू आउट द ईयर गोटे जगह गछलता नहीं मासकु दी मास गछ आ बाकी नहीं सेठी तार बिहेवियर तार इंटरेक्शन बिकॉज इकोसिस्टम व्हाट इज इकोसिस्टम इट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन गोटे कम्युनिटी जे कि गोटे बायोटिक कंपोनेंट जे कि नॉन बायोटिक और एबायोटिक या फिर बायोटिक कंपोनेंट सहित रिएक्शन इंटरेक्शन करूची एई है ना कांसेप्ट होंगे नहीं दिस इज बायोटिक बर्तमान मु कहबी कि कोपेन्स क्लासिफिकेशन रे आमे जो पढ़ी दिले कि दिस इज राइट साइड जोटा कि होची ईस्टर्न मार्जिन दिस इज वेस्टर्न मार्जिन एंड दिस इज सेंट्रल मार्जिन करेक्ट नो कॉन्टिनेंटल रो लेट्स सपोज दिस इज चाइना टाइप क्लाइमेट this is what this is Mediterranean climate and this is my steppe मतलब तमे को can I say this China type climate is considered to be one type of ecosystem throughout the year rainfall होंगे नहीं yes can I write CF no dry season yes can I write Mediterranean CW CS summer dry winter rainfall correct yes and steppe can I write CW winter dry summer rainfall तो ता माने या अनुसार वेजिटेशन रे भी चेंजेस आसीबो होंगे नहीं वेजिटेशन रे भी चेंजेस आसीबो जदि वेजिटेशन रे चेंजेस आसला दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट एनवायरनमेंट होंगे नहीं सो क्लाइमेट चेंज विल मेक चेंजेस टू द एनवायरनमेंट ट्रू आ जदि एनवायरनमेंट रे चेंज आसला एठी जो कम्युनिटी थिबे ए कम्युनिटी एनवायरनमेंट सहित रिएक्शन करले ताकू मु इकोसिस्टम कहूची दैट मींस दिस इकोसिस्टम विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस इकोसिस्टम बट सेम लैटिट्यूड सो सेम लैटिट्यूड रे मते मल्टीपल इकोसिस्टम देखा जिवे तो एई इकोसिस्टम गुडा को मु जदी जोड़ीबी दिस इज कंसीडर्ड टू बायो यस बायो हबो दिस इज कंसीडर्ड टू बी बायो देन मल्टीपल बायोम को मु जदी जोड़ीबी दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर सो सबुटु बडा होची कोन ना बायोस्फीयर सेथे वर्ल्ड रे तमे देखो बेसी बायोस्फीयर नहीं बहुत कम बायोस्फीयर इकोसिस्टम देयर आर मल्टीपल इकोसिस्टम कम्युनिटी देयर आर मल्टीपल कम्युनिटी पॉपुलेशन देयर आर सो मेनी पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन जदी इंडिविजुअल कोइबी जदी नंबर ओडा म कहबी बुझी परछ ना नहीं individual number will be so much individual number so much then population ale ei so much number will be considered to be small population भाबिना 100 टा population ग्रुप अछती से माने जोडी हे कि वर्तमान बनेले पांचटा कम्युनिटी रो आसिले दीटा इकोसिस्टम आसला गोटे बायोम टा गोटे बायोस्फीयर बुझियला ना कार डाउट अछि एथिरे दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ एनवायरनमेंट तो ज्योग्राफी मु पढाइथिली बोली मते इजी होचेडा बुझे ताई यस नाउ कंसीडर टू बी नाउ हमकु पढिबार कोन अछि इकोलॉजी होंगे नहीं इकोसिस्टम तो परे पढिबा कि इकोसिस्टम रे होची कोन बस कांसेप्ट क्लियर थिबा दरकार भाई इकोसिस्टम मींस इंटरेक्शन ऑफ व्हाट ए बायोटिक कंपोनेंट व्हिच इज ए कम्युनिटी विथ द एनवायरनमेंट दैट इज इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कथा देखिबा देन आमे मैराइन इकोसिस्टम कथा देखिबा सेतरा आमे देखै गोटे इंडिविजुअल से एनवायरनमेंट सहित केमिति डील करूची जदि केमिति डील करूची सेटा को से इंटरेक्शन टा को भी पढिबार अछि दैट इज इकोलॉजी बुझी परदो ना दैट इज इकोलॉजी तो हमको देखिबार अछि व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन दे आर डूइंग तो से इंटरेक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन हबो गोटे बायोटिक इंटरेक्शन हबो गोटे बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन भी हबो इज दैट क्लियर ओके चलो देखो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी तो मु तुमको कहली इंडिविजुअल देन मु तुमको कहली पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोस्फीयर कार डाउट अछि एथिरे एंड से किए देथिले टर्म अर्थर तांसले देखो तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इंडिविजुअल लिविंग बीइंग ability to act then they can do their functions independently जो ऑर्गेनिज्म अछंदी चाहे से को भी इंडिविजुअल हो they can act they can do their function independently that is what we call individual say individual group of organism usually the same species occupying a defined area during a specific time that is what we call population yes
Now so many populations, if the populations of different species, भाविनो human species, cat ର species, dog ର species, एमाने सब different species living and interacting in a habitat or particular area, habitat या word भी आसीबो जोठी से माने रुहंती, that is habitat, natural habitat, ये word आसे भाई, terminology important. So community होची कोन ना different species, population of different species, they are living and interacting with each other, that is community. Structured and functional unit of a biosphere consisting of a community of living beings and the physical environment both interacting and exchanging between them. That means जदि community interact कला environment सहित, that is ecosystem. ये ना यही मैं तुमको कहती, true. And finally there is biosphere. So what is this ecosystem? This ecosystem concept, this term coined by Arthur Tansley. मन रहेगा. So when the community reacts with biotic or abiotic, that is ecosystem, and this biotic or abiotic, that is nothing but the environment, correct? No, and यार जदि मु reaction टाको पढ़िबी, that is my ecology. So component of ecosystem जदि तमे देखियो ecosystem रो गोटे abiotic component, गोटे biotic component, गोटे abiotic component आ गोटे होची biotic component. Abiotic component रे there are climatic factor, edaphic factors. Okay, no worry, एगुडा सब मन रखिया दरकार नै. बट आम पे इंपोर्टेंट होची बायोटिक कंपोनेंट पढ़िया. बायोटिक कंपोनेंट पढ़ले फूड चेन आसीबो, बुझी होची ना नहीं. एबायोटिक कंपोनेंट वेरी सिंपल कि एबायोटिक कंपोनेंट रे गोटे होची क्लाइमेटिक फैक्टर जो थरे रेन अछि, लाइट अछि, विंड अछि, टेंपरेचर अछि. देन देयर आर लाइक these are related to what? These are related to what? Atmosphere. होंगे नहीं? Atmosphere. These are related to what? तमरो लिथोस्फीयर. या फिर तमे हाइड्रोस्फीयर नहीं जाओ, जो थरे कि सॉइल थिबो, सॉइल रो पीएच थिबो, मिनरल्स थिबो, टोपोग्राफी थिबो, करेक्ट? नो, दीज आर एबायोटिक. जीवन तो नुह, निर्जीव, नॉन लिविंग. बट बायोटिक रे देयर विल बी प्रोड्यूसर्स, देयर विल बी कंज्यूमर्स, देयर विल बी डिकंपोजर्स. सो प्रोड्यूसर्स दे आर ऑटोट्रॉप्स, निजो खाइबा निजे प्रोड्यूस करि पारंती. देन देयर विल बी कंज्यूमर, दोज आर द हेटेरोट्रॉप्स, and there are decomposer, those are called to be saprotrophs. कौन कहली? Producer, these are called autotrophs. Then there are consumer, these are called heterotrophs. And decomposer, there are called saprotrophs. Clear? Okay. ना ये जो कंज्यूमर ना प्रोड्यूसर होची भाई सिंपल, सी निजे प्रोड्यूस सब कला, किंतु ये जो कंज्यूमर ना देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर. तो तमे बर्तमान देखो जदि ये डायग्राम टाको मो टिके बेटरली बनैबी, मु कोन कहली, मु कहिली कि दिस इज माय इकोसिस्टम. बुझा पड़ुची इकोसिस्टम? Yes, ecosystem means the community will interact with whom? Environment, that is ecosystem. Then a ecosystem रे दुटा पार्ट थिबो, गोटे होची बायोटिक कंपोनेंट आ गोटे होची एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट रे मोर दीटा, गोटे होची क्लाइमेट रिलेटेड आ गोटे होची एडाफिक रिलेटेड. सो क्लाइमेट रिलेटेड हेले मोर विंड हे गला, रेनफॉल हे गला, टेंपरेचर हे गला, करेक्ट? नो, देन लाइटनिंग हे गला, लाइट. एडाफिक हे गले सॉइल हे गला, मैराइन हे गला, मिनरल हे गला, पीएच कंपोनेंट हे गला, करेक्ट? ए सब होची मोर एबायोटिक. लाइट इज रिलेटेड टू सन. बायोटिक कंपोनेंट तीनटा जिंस, गोटे होची प्रोड्यूसर, गोटे होची कंज्यूमर आ गोटे होची तमरो डिकंपोजर. बुझियला? प्रोड्यूस जने कला, निजो खाइबा निजे बनै परची, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. कंज्यूमर से माने डिपेंड करिवे प्रोड्यूसर ऊपर खाइबा पाई, या फिर गोटे कंज्यूमर आ गोटे कंज्यूमर ऊपर भी डिपेंड करिवो. फॉर एग्जांपल मु माछो खाउची, करेक्ट? नो, माछो किछि भाबिनो कोरल रीफ्स खाउची, करेक्ट? नो, तो कोरल रीफ्स दे आर लाइक प्रोड्यूसर्स. Macho, that is considered to be primary consumer, and I will also consume fish, that means I will consider to be secondary consumer. Is that clear? So this consumer can be primary, it can be secondary, it can be tertiary, or it can be quaternary. Then ए कंज्यूमर हो या फिर प्रोड्यूसर हो, एमाने तो केबे ना केबे मरिबे ना मरिबे नहीं मरिबे. दैट इज हिस्ट्री रू भी पढ़ाई कि भाई जो यदि पास्ट देखियो समस्त मरिबे. मले आंको कामटा के करिवो?
किए करिवो आंकु माटी रे मिसेबार काम किए करिवो मनीष अछि बोली भाई तमे ताको जाली दउछ व्हाट अबाउट अदर्स तांकु किए जालिबो देन लागि जिवे डिकम्पोजर ताको गुंड कर दे एकदम से अब बंचिलानी गुंड कर दे देखि न बेले बेले रास्ता घाट रे कुकुर कुकुर मरी पड़थिबे जे ताको केही किछि काम न कले तारो करे धीरे 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 डिकम्पोज यस होंगे नहीं सो दीज आर कॉल्ड saprotrophs एटा हमको निहाती पढियार अछि ई तक हमको बहुत पढियार अछि काहे आंक भीतर इंटरेक्शन होछि फूड चेन रो कांसेप्ट एठु ही आसीबो पिरामिड रो कांसेप्ट सब एठु ही आसीबो decomposers are also consumers yes based on the statement I will say they are the consumers but their activity is to decompose but ultimately what they do decompose how they do by consuming yes scavenger पढिबा गोटे पर गोटे पढिबा scavengers will be there decomposers saprotrophs so scavenger से चिलो सागुणा से माने से आगो फास्ट से माने गोटे पर गोटे गोटे काम किए करिवो आगो फास्ट कामटा कार देन का सेकंड कामटा कार से अनुसार हम देखिबा so at least एतिकी त बुझा पड़ला ना yes yes okay so now when I say interaction बर्तमान मु कहूची कि बर्तमान मु इकोलॉजी पढिया को जाउची ecology means the interaction between a biotic with abiotic or biotic with biotic correct no that is the interaction now bhabinyo this is a population 4 and individuals are noted as t1 t2 t3 so emane hochati gote species tankar hochi population p4 emane gote prakar species tankar population hochi p3 ye hochi lion species ye hochi bhabinyo horse ki jaha bi ko gote species correct बर्तमान जदि हॉर्स भीतर कथा हला से माने भी तो इंटरेक्शन कर परिबे करेक्ट दैट इज इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन होंगे नहीं इंट्रास्पेसिफिक ट्रू जदि गोटे इंडिविजुअल सहित कथा हला दैट इज इंट्रास्पेसिफिक सो द इंटरेक्शन बिटवीन द सेम पॉपुलेशन इज इंट्रा between the same population is intra interaction between the population a population भीतर interaction गोटे डियर अछि गोटे लायन अछि तांको भीतर इंटरेक्शन दैट इज इंटरस्पेसिफिक that means जदि के काहा को कंज्यूम करि जाउछि can I say these are mostly related to interspecific मनीष को थोड़ी खाइबो yes कुकुर को थोड़ी खाइबो जनरली नो yes so intraspecific and interspecific now if you see this interaction between population among the community that is what we call this ecology 1869 there was a German Ernst Haeckel so see a terminology टा नै के आछन कोटा होची इकोसिस्टम आ कोटा होची इकोलॉजी कि ecology is different and ecosystem is different everyone is clear right ecology is different and ecosystem is different ecosystem is nothing but the community interaction that's it we are not going to study that interaction these we understood that there are some interactions that's why it is ecosystem done but to study that interactions how they are doing these interactions what kind of interaction whether it is intraspecific or interspecific that is what we call ecology is that clear yes study is ecology like biology zoology similarly study is ecology now what is this species we told that group of individuals they are considered to be species so what can be the species fine condition kono now they should capable of reproduction either through interbreeding or producing offspring then they will belong to the same species so gote hochi species ro category ase pai gote hochi they should be capable of reproduction and the offspring has to be fertile that means the offspring has to again go for reproduction yes species बुझा पड़ला individual human being that is one species ant that is one species lion that is one species they should be capable of reproduction whether it can be interbreeding or producing offspring and the offspring is also should be fertile now exception रछि कि donkey au horse जदि सेमानक भितरे breeding हला correct if they go for reproduction then there will be a mule which will be offspring that is sterile that is not fertile कोन कोना donkey जदि male थिबो and horse जदि female थिबो then असला mule which is sterile जदि donkey female and horse be male ताहले आसे hinny which is also sterile so horse male हेले hinny h and h horse जदि male हला hinny
जदि हॉर्स फीमेल हैला देन म्यू इज दैट क्लियर देन ए स्पेसीज जो जगह रहिबे ए स्पेसीज माने जो जगह रहिबे किछि ना किछि तो जगह रहिबे ना से माने सो व्हाट इज दैट प्लेस जो जगह से माने रहिबे दैट इज कॉल्ड हैबिटेट तमर ह्यूमन बीइंग रो ह्यूमन हैबिटेट एनिमल स्पेसीज रो तांकर हैबिटेट जनरली जो माने एक्सटिंक्ट स्पेसीज तांकर हैबिटेट होची नेचुरल जू करेक्ट नो नेशनल पार्क जू दैट इज द हैबिटेट देन ए हैबिटेट रे सेमान तो रहिबे सी वर्तमान में पढुचे इकोलॉजी नॉट इकोसिस्टम इकोलॉजी सेमानकर फंक्शन आमे देखुचे जो हैबिटेट रे रहिबे से हैबिटेट रो एनवायरनमेंट सहित सेमान इंटरैक्ट करिवे ना करिवेनी करिवे जदि एनवायरनमेंट सहित इंटरैक्ट करिवे को टाइप रो इंटरैक्ट करिवे ताकर किछि फंक्शन अछि कि रोल्स डिफाइन्स अछि कि यस दैट इज कॉल्ड नीचे सो द फंक्शन ऑफ ए स्पेसीज प्रेजेंट इन ए हैबिटेट गोटे हैबिटेट रे जतले गोटे स्पेसीज रहूची से हैबिटेट रे थिला बेले एनवायरनमेंट सहित जो इंटरैक्ट करूची सेतले से करूची कोन कोन ना जो फंक्शन ओडा से करूची मु खाउची मु पिउची मु रहूची मु आई विल गो फॉर रिप्रोडक्शन आल्सो करेक्ट नो तो ए जो काम गोडा यस ए जो काम गोडा दिस इज व्हाट वी कॉल नीचे और द ऑक्युपेशन ऑफ ए स्पेसीज इन इट्स हैबिटेट ऑक्युपेशन करेक्ट ये होची नीचे नाउ जदि सेम फंक्शनल वर्क हैला जदि सेम फंक्शनल तम घरे भाबिनो तमे तमे आ तम भौणी रहउछ यू आर आल्सो फीमेल एंड योर सिस्टर इज आल्सो देयर एंड दिजण को कहला कि भाई दिजण जाक जाई कि रोसई करो देन झगड़ा हबार चांसेस अछि ट्रू जदि दिजणकर सेम फंक्शनल वर्क हैला एंड जदि एठी शेयर हो ही नहीं देन देयर विल बी कंपटीशन शेयर हेले कंपटीशन यस सो ए भीतर झगड़ा हबार चांसेस अछि सो जदि सेम फंक्शनल वर्क हैला एंड इफ इट इज नॉट शेयर्ड मिसी की काम कलो देन फाइन जदि मिसी की काम न करी कि अलग अलग करी काम कलो देन आसी जीवो कंपटीशन if shared then competition and ecosystem will displace one another for example गोटे कम्युनिटी गोटे प्लेस अछि मगध वाला कांसेप्ट नै जाओ मगध रे बहुत राजा आसी समस्त काम होजी गोटे मु राजा हेबी फंक्शन तो गोटे ना एम गोटे ट्रू मु राजा हेबी जदि एटा कहबो कि एटा मु जदि शेयर कर देबी चलो समस्त मिसी कि राजा हे रहबा ताले दिस विल बी गणसंघ रिपब्लिक वाला कांसेप्ट यस गणसंघ वाला कांसेप्ट ताले मिसी बासी रहबे किंतु जदि कहबो कि आई वांट शेयर ए मगधटा होची पूरा मोरो आई विल बिकम द ओनली किंग देन भाई मते भी काली केउटा रिप्लेस करियो देयर विल बी कंपटीशन यस सो द फंक्शनल वर्क इफ इट इज सेम and if it is not shared then there will be competition and there will be displacement of the ecosystem ए इकोसिस्टम को डिस्प्लेस किए रखे काली फ्यूचर ऐसे करबो बुझियाला ना नहीं यस सो से कांसेप्ट रे जो तमे देखियो देयर इज समथिंग कॉल्ड अडॉप्शन द स्पेसीज व्हिच गेटिंग अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट किछि स्पेसीज तांदी जो माने अडॉप्ट कर जे फॉर एग्जांपल मरुभूमि रे से जो गछ उडा तांदी से माने जानि छथि दिस इज माय एनवायरनमेंट दिस माय क्लाइमेट जोन एंड आ सहित मते जदी बंचिवार अछि ना ताहले मु मोर पत्र उडा को टिके मोटा कर देबी बुझि होछि ना डेजर्ट हैविंग थिक लेयर ऑफ लीफ ताकि से जो इवापोरेशन होबा कथा वाटर सेटा न हो करेक्ट नो फिश हैविंग गिल्स ताकि निश्वास प्रश्वास टिके भल से नै परिबो पानी भितरे बुझि होछि ना नहीं सो इफ देयर विल बी अडॉप्शन देन डेवलपमेंट हैपेंस व्हेन देयर इज अडॉप्शन कि जदी तमे अडॉप्ट कलो सिचुएशन को यस कैमल हैविंग हम जदी तमे अडॉप्ट कलो सिचुएशन को then you will say like okay I will able to sustain correct no but if species cannot evolve fast enough with the changing environment कि जदी तमे changing environment रे निजो को adopt न कलो you will go for extinction this is applicable for human life also चाहे कोनोसी सिचुएशन आसो करेक्ट नो चाहे कोनोसी भी सिचुएशन लाइफ रे आसो जदी तमे adopt कलो से सिचुएशन को एक्सेप्ट कलो फर्स्ट होची एक्सेप्टेंस जदी ए डेजर्ट रो जो थिक लेयर ऑफ लीफ करेक्ट नो ए जदी गच्छ भाबियो गे मु एक्सेप्ट करनी एटा मु बंची ही परिबिनी देन गॉन एक्सटिंक्शन करेक्ट एक्सटिंक्शन जदी तमे अडॉप्ट करि गलो से सिचुएशन को धीरे धीरे डेवलपमेंट हबो नो डाउट यस दिस इज व्हाट एनवायरनमेंट विल टीच यू आल्सो इन लाइफ होंगे नहीं कोनोस भी सिचुएशन आसो भाई ताको समहाट मु ट्राई करबी मोर बेस्ट पॉसिबल वे रे ताको अडॉप्ट करिया पई ट्रू यस नेक्स्ट कांसेप्ट स्पेसीज
तो बर्तमान स्पेसीज जो गुड़ा से माने को टाइप रो स्पेसीज थांती स्पेसीज आर नथिंग बट दे आर इंडिविजुअल्स ओनली then there are different type of species generally 6 types the keystone species this is the most important species in ecosystem to lead or to keep the functional balance and food chain otherwise the food chain will be disturbed now this is the most important species ecosystem ro जो थे कि community थिबो interact करतो environment this is the ecosystem ए ecosystem तार food chain को balance करके रखिया पई ये species बहुत important a species बहुत important I will give you example also what is umbrella species ना helping other species गोटे species ये other species को help करूची that is umbrella गोटे छात्र तळे भाई आ तू भी आ तू भी आ तू भी आ करेक्ट नो समस्ते आसे कि मु तम मानको हेल्प करबी yes that is umbrella species it is same nature true से समस्त को भाई आसो then there is something called flagship species important species for which the place is known for important species which are called flagship species they are the important what a keystone species जे कि functional role से ecosystem राजा ताकू maintain करके रखुची then there is umbrella species जे कि समो अलग species को help भी करूची बंची के रहिया भाई then there is flagship species जो species पाई ही से जगह को जणा जाउची बुझी होची ना नहीं for example गुइंडी black bug generally गुइंडी रे रहिया कथा नो that is black bug is a considered related to this Gujarat वाला concept marine national park ए सब गिरगिरना से सब आडे जाकी तको ब्लैक बग मिलवा कथा बट से ने कि गुइंडी जोटा कि अछि तमिलनाडु रे ने कि ब्लैक बग रखि छथि एंड ब्लैक बग लाकी गुइंडी भी फेमस है जाई सो द flagship species it is the important species for which the places is known for that is flagship then there is something indicative species ना सेही स्पेसीज जे कि बतै दबो कि इकोसिस्टम रे किछि ना किछि प्रॉब्लम होबार अछि इकोसिस्टम भलो अछि कि खराब अछि इंडिकेटर देखि दिबो ना ट्रैफिक रो इंडिकेटर ग्रीन जाओ रेड रही जाओ ऑरेंज रहिया पई प्रस्तुत हो ट्रू यस सो दीज आर इंडिकेटर कि बर्तमान इकोसिस्टम रे हबो कोन कोरल रे at a particular condition coral bleach वाला condition जदी ए भले किछि से देखै देबे कि भाई वार्म वाटर अधिक गलानी धीरे धीरे कोरल ब्लीच होवा स्टार्ट हो जो तो जदी कलर चेंज हैला ताल तुम जानि परबो कि भाई दिस इज द स्पीसीज व्हिच इज एक्सप्लेनिंग मी दैट द इकोसिस्टम इज गेटिंग डिग्रेडेड बुझियो ना बुझियो that is indicative species then there is endemic species restricted to particular geographical condition कि से माने केवल गोटिए geographical location नै रहबे सब आडे मिलबे ही नै तुमको that is endemic yes then there is alien species they came from outside and generally e माने आसे कि ना competition बढ़ेबे replacement of ecosystem हो बुझियो ना नहीं alien species they came from outside तमे देखि तो से जो गफ रे सब कीड़ा लागि जानती बेले टाइम रे गोटोटा आसीबे कि धान फान करथिलु सब बाहर स्पेसीज पळे आसले सब खाइ देई गले कीड़ा खाइ देई गले ट्रू दीज आर एलियन स्पेसीज destruction of the environment बुझेला which one of the following term describes not only the physical space occupied by the organism but also its functional role in the community of organism UPSC 2013 this is OPSC 2023 actually जोटा कि 2024 रे एग्जाम आइतला ट्रू 10 years gap ओके CAPF 2020 रो क्वेश्चन देखो transition zone of varied natural vegetation occupying the boundary between two adjacent and different plant community is known as what ecotone that is the transition zone we'll talk about what is ecotone the ecological niche of an organism relates to এটা করিছিল অলরেডি ভাই মনে রাখো niche will be related to the specific habitat competition এটা গলা which one of the following describes best description of the term ecosystem कोटा को best describe करूचे yes a community of organism interacting with one another that is intraspecific interaction only what about interspecific correct সেটা তো দেই নাই this is half correct এটা half correct the part of the earth which is inhabited by living organism the part of the earth which is inhabited interaction विषय को ही नहीं किसी a community of organism together with environment which they live yes with the environment
community with the environment, that is ecosystem. The flora and fauna of a geographical area, so what, they are not interacting. Flora and fauna both are living. Biotic. What about abiotic? Nahi. Yes, best description होंगे नहीं 2015 UPSC. While studying the vegetation of an area, terms like population and community are often used. Which one of the following statement best describe a population? देखो, a group of organism of one species living in the same area at the same time. A group of organism of one species living in different areas during different seasons. Is that all? A unit consists of biotic and abiotic component. Population which is biotic and abiotic component. A group of organism of more than one species living in the same area at the same time. Is that the population or that is community? A group of organism of more than one species. More than one species. Yes. Of one species, I will go ahead. Yes, a group of organism of one species. तो मन पका diagram मन पका मैं तुमको कहती ना lion species that is lion population, dog species that is dog population, human species that is human population होंगे नहीं. जदि मु group of many species नहीं जीवी that will be population रो हेजी बसटा कोन community बुझि पाछो. डायरेक्ट क्वेश्चन देखो जदि तुम टर्मिनोलॉजी जानि थिबो CDS2 2021 लो क्वेश्चन. An ecosystem is consist of what? Producer, consumer, decomposer in a particular area. All the plants and animals of an area. A living community and its environment. Yes, yes. देखो community and environment, that is the keyword. Ecosystem. Ecosystem, community and environment. मन रहइबो. सी जे पता क्वेश्चन न करबो ना खाली पढिले किछि बुझा पड़िबो. क्वेश्चन कले ऑलरेडी गोटे क्वेश्चन देखिले ना भाई इकोलॉजिकल निसे हैबिटेट रो कांसेप्ट रिलेटेड. यस पढि देथिले तो बट कला गोटे टफ हला. Which of the following is or are correct definition of habitat? Habitat or correct definition कौन? Natural environment of a living organism. The place where one would go find and particular living. Natural environment of a living organism and the place where one would go to find particular living organism. A complex of several type of communities. It is a natural environment of a living organism. Where go and find the particular living organism. Is it the place where one would go to find? See, एगुड़ा माने टिके टिके देखा हो confusing वाला statement. SSC रो तो habitat माने कोन जोठी तमे गोटे organism रुहे एया ना. And this should be a natural environment habitat. एमिति न कि माछ को तमे कहबो कि मु marine न खोजि कि करेक्ट नो जाई कि कोठी खोजिबी aquarium रे. That is wrong. The place where we go to find the particular living organism. This is half correct. But natural environment of a living organism and the place where we go, one would go find the particular living organism. बतन B आउ B भितरे मु तो जदि मारिबी B आउ D भितरे मारिबी तो D टा को टिके अधिक एक्सप्लेन करछि तो D टा को मारिबा. D टा करेक्ट अछि. Natural environment. See, this should be natural environment, not like okay unnatural की man made वाला concept. ना से concept नहीं. तो भाई एथिरु सिखो तमे habitat it is the natural environment of a living organism and the places where one would go to find that particular living environment. Natural environment तमे खोजो, not कैसे marine रे खोजो. Sorry, marine जगह रे तो छडी कैसे aquarium रे खोजो. That is wrong. Correct? Yes. A और C तो भाई कटि जो आ बाकी रहला B और D भितरे जोटा बेटर लागुची. Which of the following branches deal with the interaction of the same species of living organism with their non-living? एटा तो करथिले. Energy flow. An ecosystem consists of, yes, try this. IES repository 2014. Ecosystem consists of only trees, only, but only all plants and animals, all living and non-living. Yes. D. Super. See, these are mindset only. Only देखिले तो भाई काट दो. Only animals in that area. Only पढ़ी नहीं पढ़ी. All plants and animals, all living and non-living. That is good. Biotic and abiotic wala, because ecosystem environment achi. Environment, ecosystem means what? Community, which is biotic, deals with environment is biotic as well as abiotic. Biotic होची living, abiotic होची non-living. That means ecosystem better describe करियो जदि living और non-living true ना होंगे नहीं. कोन आपनकर भी स्वप्न अछि गोटे गवर्नमेंट चाकरी पाइबा पई किंतु सुजोग आपनका पाखरे पहुंची पारुनी. सेथि आपण देखिबे बहुत पिला
से माने गाँव बाहर की सहर आड़ को मुह किंतु सहरर खर्च देखिले वर्ष को लगभग 1.5 लाख टका खर्च हो किंतु एबे समय बदल गाँ गाँ रु एबे आमे ओएस ओसीएस ओएसएससी ओएसएससी रा प्रिपरेशन स्टार्ट करि परिबा परीक्षा सभा माध्यम रे। Every student has a dream, but opportunity in cities, preparation costs over 1 lakh. Pariksha Sabha presents the Lakshya batch. Get expert guidance for OPSC and SSC. Now